Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss the second part of Algae, that is reproduction. What is reproduction? Reproduction. Mean again, दोबारा. Production mean to produce, पैदा होना. अब रिप्रोडक्शन का बेसिकली अगर हम इसका कंसेप्ट समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक, एक खूबी ये भी है कि वो अपनी तादाद को इंक्रीज करते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. तो जो एल्गी हैं इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. मीन ये भी अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं. तो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच आर प्रेजेंट इन एल्गी. अब ये 3 टाइप्स कौन सी हैं? सबसे पहली है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, द सेकेंड वन इज asexual reproduction and the third is sexual reproduction. These 3 types are further subdivided into different types. So we are going to discuss these 3 types one by one. The first one is vegetative reproduction. So vegetative mean body. So in vegetative reproduction, any part of body gets separated from the parent body and develop into a new daughter body. So if we define the vegetative reproduction, we can define any part of body gets separated and develop into a new body. Mean जो पूरे की पूरी एल्गी की बॉडी है उस बॉडी में से कोई एक छोटा सा पोर्शन डिटैच होगा और डिटैच होने के बाद डिवेल्प हो जाएगा इनटू अ कंप्लीट न्यू बॉडी. So the vegetative reproduction is further subdivided into 3 types. The first is fission. Fission mean टूटना, to split something into different components. So in this type of vegetative reproduction, the body undergoes the process of mitosis and produce 2 daughter cells. Now this is an algae. अब इस algae के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो इस बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होती है, मीन कैरियोकाइनेसिस होती है. कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन स्प्लिट होना. सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो 2 बॉडीज के अंदर डिवाइड होता है. उसके बाद जो बॉडी है ये इन्वेजिनेट होती है. उसके बाद इस बॉडी के अंदर एक वॉल बनती है, एक सेप्टम बनती है और एट द एंड दिस बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स. So this type of reproduction is known as fission, जिसके अंदर सिंपली क्या हो रहा है कि एक सिंगल बॉडी थी, ये बॉडी माइटोसिस के प्रोसेस में स्प्लिट हुई है और स्प्लिट होने के बाद 2 नए डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है. This type of vegetative reproduction is known as fission. The second one is fragmentation. Fragmentation word arise हुआ है fragment से, और fragment किसे कहते हैं? छोटे से टुकड़े को. अब इसको हम उर्दू के अंदर ये कह सकते हैं छोटे छोटे हिस्से होना, मीन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स का बनना. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द मेन बॉडी स्प्लिट इनटू और द मेन बॉडी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट कन्वर्ट इनटू अ कंप्लीट न्यू बॉडी. इफ दिस इज एन एल्गी, अब सबसे पहले क्या हो रहा है? दिस algae is divided into different fragments and each fragment is developed into a new daughter body. So this type of reproduction is known as fragmentation. This is the parent body. From parent body different fragments are arises and from these fragments new daughter cells are arise. This type of reproduction is known as fragmentation. Now the next type is budding. Budding mean किसी भी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनना, मीन एक छोटा सा उभार बनना. अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आउटग्रोथ फॉर्म ऑन द बॉडी एंड डिवेलप इनटू अ कंप्लीट न्यू बॉडी. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ algae, now see there is a small outgrowth is formed on the side of the body and this outgrowth further detach from the main body and develop into a complete daughter body. Now this type of reproduction is known as the budding.
The second type is asexual reproduction. अब asexual और vegetative reproduction के अंदर डिफरेंस क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि जो बॉडी है वो बॉडी डायरेक्टली डिवेलप हो रही है इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, इनटू अ न्यू बॉडी। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इस रिप्रोडक्शन की टाइप के अंदर बॉडी के अंदर खास किस्म के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं स्पोर्स का। और अब हम इन स्पोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट आर दीज स्पोर्स? दीज स्पोर्स आर एक्चुअली यूनिसेलुलर reproductive structures which are formed during harsh environment or which are formed during unfavorable conditions. लाइक अगर pH बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एल्गी की जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जो स्पोर्स हैं ये फर्दर डिवेल्प होंगे इनटू अ न्यू बॉडी. So there are different types of spores which are produced in algae. The first one is zoospores. अब zoospores actually क्या है? Zoo कहते हैं एनिमल को और स्पोर कहते हैं यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को. अब जू कहते हैं एनिमल को, और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस. So these zoospores are actually motile spores which can be oval shaped or spherical. ये अंडानुमा स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं, या बिल्कुल गोल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, और ये मोटाइल है. मोटाइल का क्या मीनिंग है? इफ दिस इज अ स्पोर, this spore will contain small flagella on its body, and with the help of this flagella this spore can move from one place to another place. These zoospores are produced at night and released in early morning. These zoospores are produced inside the specialized structures which are known as zoosporangium. The second type is aplanospores. These are the reverse of zoospores. Zoospores are motile spores, while the spores which are non-motile are known as the aplanospores. Why these are non-motile? Because these are the spores which does not contain any flagella. The third one is hypnospores. अब hypnospores किसे कहते हैं? अगर aplanospores अपने अराउंड एक थिक लेयर को प्रोड्यूस करें, then these aplanospores will be known as the hypnospores. If this is an hypnospore, this hypnospores produce a thick body, a thick layer around itself, then it will be known as the hypnospores. The fourth type of spores is known as achainids. Achainids are the structures which get round and enlarge in size. अब ये एक एल्गी की पूरी बॉडी है. अब इस बॉडी के अंदर क्या होता है कि कोई एक सेल enlarge होता है, और enlarge होने के बाद ये कुछ टाइम के बाद क्या होगा? बॉडी से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद दिस विल फॉर्म इनटू a new body. Now this type of spore is known as achainids. The next one is exospores. अब exospores, exo mean outside, spore means spore. Mean these are those spores which produce on outside of the body. For example, if this is the body of algae, this is its outer cell wall. अब इस केस के अंदर क्या होता है? जब एक्सोस्पोर्स बनते हैं, जो सेल वॉल है वो रप्चर होती है, और सेल वॉल के रप्चर होने के बाद जो एंड है यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, और ये जो बॉडी का बाकी जितना भी पोर्शन है वो डिटैच हो जाता है. नाउ दिस स्पोर इज नोन एज द एक्सोस्पोर. Why this is known as exo? Because this spore is produced on the outside of the body. The last one is endospore. Endo mean inside and spore mean spore. These are the spore which produced inside the body of algae. If
This is the body of algae. In this case, the protoplasm of the body get divided, it gets separated into different portions, and each portion is known as the endospore. And after some time, this portion is divided into a complete new body. Now, these are the spores which are produced inside the algae. That's why these spores are known as the endospores. Now, the third type of reproduction in algae is sexual reproduction. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एक्चुअली ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हों, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हों, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली रिलेटेड टू two different sex organs which are going to combine with each other. Now we can define this sexual reproduction as fusion of gametes is known as the sexual reproduction. Now what is gamete? Gametes is actually a haploid structures. Haploid structures mean structure which contain one set of chromosome. बिल्कुल इसी तरह अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमारे एक ह्यूमन जो बॉडी का हमारा सेल है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. अब जो हमारे गैमीट्स हैं, जो हमारे सेक्स सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर उन सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 23 हैं, मीन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है. तो जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं गैमीट्स का. नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स. One is known as isogamete, the second one is known as heterogametes. Iso means same and gametes mean haploid structures. Mean these are the gametes which are same in size and shape. These are known as the isogametes. Mean the male and female both the gametes are same in size and structure. The second is known as heterogametes. Hetero mean different, मुख्तलिफ. अब ये जो गैमीट्स हैं ये मुख्तलिफ होते हैं. किस चीज़ के अंदर डिफरेंस होता है? इनके साइज और शेप के अंदर डिफरेंस होता है. इस वजह से हम इन गैमीट्स को नाम देते हैं हेटेरोगैमीट्स का. मीन द गैमीट्स विच आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप. अब ये जो गैमीट्स हैं इनकी प्रोडक्शन की बेस पे हम इनको दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. अब सम टाइम एल्गी के अंदर जो गैमीट्स हैं वो दोनों गैमीट्स मीन मेल और फीमेल एक ही बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं. इस कंडीशन को हम नाम देते हैं होमोथैलिक का. होमो कहते हैं सेम को, और जो थैलिक है ये वर्ड निकला है थैलिस से, मीन बॉडी. Mean a condition in which both the gametes, mean both male and female gametes, produce on the same body. This condition is known as homothalic, or in other words we can say monoecious. Mono means same. So these gametes produce on the same body, while in the other case the both gametes produce on different body. That's why these type of gametes are known as heterothalic. Hetero mean different, thalic mean body. Mean these gametes produce on two different bodies. No, these gametes undergo the process of fusion. अब ये जो gametes हैं चाहे साइज के अंदर, शेप के अंदर सेम हो, डिफरेंट हो, सेम बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हो या डिफरेंट बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हो, इन गैमीट्स ने अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ फ्यूज होना है. अब ये जो फ्यूजन है ये फ्यूजन थ्री टाइप्स की है. द फर्स्ट इज आइसोगैमी. आइसो मीन सेम एंड गैमी मीन फ्यूजन. अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो शेप और स्ट्रक्चर के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं और इनकी आपस में फ्यूजन होती है. Mean this is the male gamete and this is the female gamete. अब ये जो gametes हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं. फर्स्ट इनके अंदर प्लाज्मोगैमी होती है. प्लाज्मोगैमी मीन फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म.
और उसके बाद कैरियोगैमी होती है, कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड गैमी मीन फीमेल। तो पहले इनके जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और उसके बाद जो इनके न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और ये दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मीन इनटू अ जाइगोट। The second case is anisogamy. This is the condition in which the structure of gametes is similar but the size is different. मीन अगर एक जो है वो साइज के अंदर स्मॉल है तो दूसरा जो गैमीट होगा वो साइज के अंदर लार्ज होगा। अब इस केस के अंदर जो मेल गैमीट है वो साइज के अंदर स्मॉल है और जो फीमेल गैमीट है वो साइज के अंदर लार्ज है और ये जो स्मॉल है जो मेल गैमीट है ये एक्टिव है और जो फीमेल गैमीट है दैट इज सेसाइल दैट इज इनएक्टिव। ये दोनों हैप्लॉइड गैमीट दिस इज आल्सो हैप्लॉइड क्योंकि ये गैमीट्स हैं और गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। these two haploid gametes fuse with each other and form a diploid structure known as zygote। अब उसके बाद ये जाइगोट जो है इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होती है और ये कन्वर्ट होता है इनटू स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट अगेन कन्वर्ट होता है इनटू गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। द लास्ट वन इज oogamete। दिस इज एन एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब इसके अंदर क्या होता है जो दोनों गैमीट्स हैं वो साइज और शेप के अंदर टोटली डिफरेंट है। मीन इफ दिस इज द मेल गैमीट this will be the female gamete and this male gamete is small and active while this female gamete is large and inactive। These two gametes fuse with each other to form a diploid structure which is known as zygote। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती अगर कंडीशंस अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि ये जो जाइगोट है इसके ऊपर एक थिक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है जो इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करती है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पोर का। अब जब दोबारा कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये जो आउटर कवरिंग है ये खत्म हो जाती है और अगेन जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होती है और जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होने के बाद अगेन इसके अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस होती है और जो साइकिल है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज होल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।